Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में पॉइंटर्स के फंडामेंटल एंड बेसिस को बहुत ही कॉन्क्रीट करेंगे बाय राइटिंग वन कोड। एंड इस कोड में हम लोगों को क्या करना है, वी नीड टू डिक्लेयर एंड डिफाइन 3 वेरिएबल्स ऑफ टाइप कैरेक्टर, इंटीजर एज वेल एज फ्लोट। प्राइमरी डेटा टाइप के वेरिएबल्स को कंसिडर किया, राइट। एंड डिस्प्ले इट्स वैल्यूज एज वेल एज एड्रेस, वैल्यूज को एज वेल एज एड्रेसेस को डिस्प्ले करना है बाय ऑल पॉसिबल वेज। तो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कोड जहां पे आपके पॉइंटर्स के फंडामेंटल बहुत ही कॉन्क्रीट होने वाले हैं। सो लेट्स मूव इनटू द कोड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड चेक आउट लाइक हाउ वी कैन गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग दिस विथ ऑल पॉसिबल वेज एंड बाय यूजिंग पॉइंटर्स। So for implementation of this code, we are back into the VS Code and यहाँ पे pointers in C and CPP नाम का वर्कस्पेस है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर राइटिंग ऑल द कोड्स ऑफ दिस सीरीज, राइट। उसमें से एक कोड ऑलरेडी लिख के रखा है एंड दैट इज जस्ट प्रोफॉर्मा फॉर राइटिंग अ सी कोड, जहां पे आई एम इंक्लूडिंग stdio.h, देन void main के अंदर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम CLS लिखा है एंड printf में success is always with n infinity info solution and followed by that get char, इतना लिखा है, राइट। सो टू सेव द टाइम इन एवरी कोड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इतना जो कंटेंट है वो कॉपी करके हम लोग पेस्ट करेंगे अपने नए कोड में एंड फिर आगे का डिस्कशन हम लोग करते जाएंगे, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज पॉइंटर्स इन सी में I'll go with the new file and I'll mention that as basics.c, right? Okay, and इस basics.c में कॉपी करेंगे form.c का कोड एंड यहां पे I'll start with this basics.c. The first fundamental task is to go with the variable declaration. So पहले एक टाइप के वेरिएबल के साथ चलेंगे. Let's go with character. The name of the variable I'm keeping it as ch and the value that is I'm going to put it inside it is capital A. And इसके लिए एक पॉइंटर भी यूज करते हैं, character star cptr, right? Reading कैसे होगा? cptr is a variable of type character pointer capable of holding address of character variable, right? Now what we are going to do is with respect to the character variable हम लोग उसके values and उसके addresses को print करेंगे, right? Okay, what are the different ways through which we can do that? So let's go on looking into the first thing, that is value of ch is, पहले value करते हैं, %c करना पड़ेगा because it's of character type and हम लोग करेंगे ch। जब भी वेरिएबल का नाम लेंगे तो उसके अंदर का वैल्यू हम लोग यूज कर पाएंगे, राइट। ओके, एंड हियर नाउ इफ वी कैन रन दिस कोड एंड चेक आउट लाइक व्हाट इट गिव्स मी, सो इट शोज अस वैल्यू ऑफ ch इज व्हाट 8, राइट। ओके, यहाँ पे टाइपो एरर है, उसको हम लोग मिटा रहे हैं, वैल्यू ऑफ ch इज, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज what about its address, and we know that address can be printed with the help of what, address of operator. So यहाँ पे चलेंगे printf and यहाँ पे value of, यहाँ पे value की जगह पे करेंगे address of ch is, right, and that will be %u because we have decided to use unsigned values for printing the addresses and इसके लिए लिखेंगे address of ch, right? Okay, next to that what we are going to do is इस cptr में कैरेक्टर पॉइंटर होने की वजह से हम लोग एड्रेस ऑफ ch भी डाल रहे हैं, राइट। सो इसके थ्रू अगर मुझे चेक करना है कि एड्रेस ऑफ ch is %u, तो cptr is holding the address of ch, राइट। तो यहाँ पे इस वे में हम लोग चेक करेंगे कि cptr में सही में एड्रेस ऑफ ch is printed or not or moved or not, right? Okay, so address of यहाँ पे will be going with cptr, right? Okay, now let's run the code and check it out. So यहाँ पे value of ch is a. हाँ, आपके मशीन पे शायद ये एड्रेस अलग से आ सकता है
because it depends on the loader at what location it is loading our code inside the memory, right? But the one thing is very sure, ये दोनों भी वैल्यूज आपके मशीन के अंदर सेम आनी चाहिए, राइट? बिकॉज दिस इज द सेम थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन. एड्रेस ऑफ सीएस हम लोगों ने प्रिंट किया, उसके बाद वही एड्रेस को सीपीटीआर में मूव करके सीपीटीआर के कंटेंट को भी हम लोगों ने प्रिंट किया, राइट? So this is how we can go on printing the address of this character type, right? Okay, now what we are going to do next is, अभी हम लोग पहुंचेंगे ch के वैल्यू तक, right? The direct way I have shown you how this is working. Now indirect way से कैसे पहुंच पाएंगे? So we'll go with value of ch is, and हम लोग करेंगे %c, and यहाँ पे value at operator address of ch. तो what I am trying to do here, ch के एड्रेस तक पहले पहुंचेंगे एंड देन उसके ऊपर का वैल्यू उठा के प्रिंट करेंगे, राइट? ओके, एंड अनदर वे इज हाउ वी कैन गो विथ value of ch is, and that will be %c. and यहाँ पे do you agree that this address of ch is present in what? CPTR. So what we are going to do is, instead of this address of ch, we are going to write what? CPTR. So इसको ऐसे read करेंगे, value at CPTR, right? Okay, and let us see like how this is going to work, and will it be able to print the values of ch for us, right? Okay, let's run this code. And please observe that this time obviously the addresses will be different because हम लोगों ने code को compile किया and run किया again. So probably loader has given the different addresses for our code, right? But one thing is very sure, ये दोनों भी addresses same होने चाहिए, right? So value a, and we have printed the address of this ch into it, right? Okay, this is all about character type. Now what we can do is, we can surely go with integer values also. So उसके साथ कैसे काम करना है? So let's go with printf, एक सिंपल सेपरेटर रखेंगे यहाँ पे, and then we need two more variables. Suppose यहाँ पे कर रहे हैं अभी integer n is equal to let's say 101, and यहाँ पे integer star iptr is a variable of type integer pointer capable of holding address of integer variable into it, right? Okay, now how we can go on doing this is, let's go with, so value of n को print करना है. So what we will go with is value of n is, and this time it will be %d and what? N, right? Okay, next to that address of n को print करते हैं. So printf, and here we'll go with address of n is, and यहाँ पे करेंगे %u, unsigned value को print करना है. So use करेंगे address of n, right? Okay, and followed by that what we'll do is iptr integer pointer होने की वजह से it is capable of holding the address of what? Integer variable. तो इसके अंदर integer variable का address को डाल देते हैं, and then iptr का वैल्यू प्रिंट करके चेक करते हैं. So we'll go with printf, iptr के अंदर क्या है? एड्रेस ऑफ n है. So चेक करते हैं, address of n is, and this time %u, and here I'll simply go with iptr, right? Okay, and then अभी इन एड्रेसेस के थ्रू वैल्यू तक कैसे पहुंचेंगे, राइट? ओके, एंड फॉर दैट पर्पस आई विल गो विथ printf value of n is, and यहाँ पे %d, and यहाँ पे करेंगे value at address of n, simple one, right? Okay, and this next one is value of n is, and this time we'll go with %d, and यहाँ पे अभी देखो address of n we have moved into what? iptr. So this address of n will just get replaced with iptr, right? And star will be as it is, that is value at iptr. जब भी हम लोग वेरिएबल का नाम लेते हैं तो उसके अंदर के वैल्यू को देखते हैं. सो iptr के अंदर क्या है? एड्रेस ऑफ n है, एंड उस एड्रेस के ऊपर का वैल्यू हम लोगों को चाहिए. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग, ये सेपरेटर यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, एंड वी कुड बी एबल टू सी दिस. सो let's run the code and check it out.
कि इंटीजर के साथ भी हम लोग एड्रेसेस एंड वैल्यूज तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, राइट? ओके, वन थिंग इज वेरी श्योर हियर, राइट? ये जो दोनों एड्रेस है वो सेम रहेंगे, ये दोनों एड्रेसेस सेम रहेंगे, बिकॉज दिस इज एड्रेस वेयर योर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल इज गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड मेमोरी, and ये address ये values, right? So this is address where the integer is getting stored, this is integer का address, and these are what? Integer के values. In a similar fashion we can go for what? Float values as well, right? Okay, now you can get it very easily how to go with the float values also. So float f is equal to 1.234 हम लोग कर रहे हैं, and इस केस में float star FPTR is a variable of type float pointer, right? Okay, so इस float का value इस float का addresses को print करेंगे. So how we can go with printf, and value of f is, and this time I'll use %f, right? Okay, and यहाँ पे f का value, right? Okay, next to that printf, and we want to print what? Address, right? Okay, so address of f is, addresses will be printed with %u, and this time address of f, right? Okay, now FPTR के अंदर I am just going to put address of f and check करते हैं same value is there or not. So address of f is, and this time again %u, and यहाँ पे FPTR, right? Okay, so simply, and then we'll go with, अभी addresses के through value तक पहुंचना है, कैसे करना है? So I'll go with printf, and यहाँ पे value of f is, and that is %f, right? Okay, and कैसे पहुंचेंगे? Value at address of f. So पहले address तक पहुंचो, फिर value तक पहुंचो, like that, right? Okay, and last one is value of f is, and यहाँ पे %f, and क्या कैसे पहुंचना है? So FPTR के थ्रू पहुंचना है. So address of f is there into the FPTR. So this address of f will be replaced by simply what? FPTR, right? So value at FPTR. और इसको आप अलग नोटेशन से भी रीड कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन रीड इट एज, ये जो स्टार है उसको पॉइंटर नगर नोटेशन आप रीडिंग के लिए यूज करते हैं. सो वैल्यू पॉइंटेड बाय FPTR, वैल्यू पॉइंटेड बाय IPTR, and value pointed by CPTR. ऐसे इसको रीड करना है, राइट? ओके, सो यहाँ पे I'll go with, let's printing this values and check it out कि ये सही में हम लोगों को डिजायर आउटकम दे रहा है या नहीं. वन थिंग इज वेरी श्योर, अगेन एड्रेस चेंज हुआ है लोडर के हिसाब से, बट कैरेक्टर का एड्रेस दोनों में सेम, इंटीजर का एड्रेस सेम ओवर हियर, एंड दिस आर द एड्रेसेस ऑफ व्हाट? फ्लोट वैल्यूज, राइट? ओके, ये कोड कर लो. डेफिनेटली यू कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि एक ही वैल्यू तक अलग अलग वे से हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, राइट? वन थिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर, यहाँ पे विजडम लेवल्स ऐसे मिलते हैं. जब भी आप वेरिएबल का नाम लेते हो, नाम यूज करते हो, तो उस वेरिएबल के अंदर का वैल्यू आप टैकल करते हो, राइट? जैसे कि यहाँ पे IPTR के अंदर क्या है? एड्रेस ऑफ I, मतलब एड्रेस ऑफ इंटीजर वैल्यू, राइट? एंड देन स्टार मीन्स वैल्यू पॉइंटेड बाय दैट पर्टिकुलर वेरिएबल यू आर इंटरेस्टेड इन, राइट? सो जब भी वेरिएबल का नाम हम लोग यूज करेंगे, हम लोग बॉक्स के अंदर देखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर पिक्टोरियल एनालॉजी, एंड जब एड्रेस ऑफ यूज करेंगे तो बॉक्स के बाहर देखेंगे जहां पे एड्रेस लिखा हुआ है, राइट? ओके, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर कोड. आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है and check it out whether it is giving you the desired results or not, right? Thanks for the watching. Keep doing programming. Thank you very much.